The first post fertilization changes occur in the एंडोस्पर्म, पेन में होता है जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। इसी के बाद जो है सेकेंड फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हो जाएंगे इनसाइड द एम्ब्रियो। पहले हम लोगों ने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखा, इसके बाद हम लोगों ने देखा अबाउट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज द ओवरी वन। ओवरी किस तरह से डेवलप होती है, दैट ओव्यूल किस तरह से डेवलप होते हैं, दैट ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड्स, दैट इज कॉल्ड एज द सीड्स डेवलपमेंट। सीड्स इज नथिंग बट द फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड और मैच्योर ओव्यूल जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। So seed is the basic unit for the dispersal and for the propagation of the angiosperms. हम कोई भी जब फ्रूट्स खाते हैं तो इसमें सीड्स रहते हैं और यही सीड्स जब हम लोग सॉइल में सो करते हैं तो एक नया प्लांट आ जाता है। इसी तरह से एंजियोस्पर्म्स जो है इस वर्ल्ड में 80% जो प्लांट्स बिलोंग है एंजियोस्पर्म से करते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या रहता है, फ्रूट्स रहते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स रहता है। जब बर्ड्स ये फ्रूट्स खाते हैं तो ये सीड जो है उनकी स्टूल के थ्रू या फिर उनके बीक यानी खाने के थ्रू जो है पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। सो सीड डिस्पर्सल मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ द सीड इज द वन ऑफ द बिगेस्ट फेनोमेना फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म। इसलिए सबसे ज्यादा जो है प्लांट्स कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स है, ड्यू टू द सीड वन। सीड की वजह से क्या है, सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म्स हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। सीड्स क्या है, कहां से डेवलप होते हैं, दीज सीड्स आर डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, दैट इज द फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर्ड ओव्यूल get developed into the seeds after the fertilization. So this is the post fertilization changes, and the study of the seed is called as the spermology. Study of seed is called as a spermology. And what is the basic content of the seed? Seed के पास सबसे पहले एक चीज रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं about the seed coat. The first basic thing which should be present inside the, so outside the seed, it is called as a seed coat. And that seed coat is having the two covering. The first covering is called as a testa, and which is the outer one, and the second covering is called as a tegmen one. This is the inner. So testa or tegmen दो seed coverings हैं. These seed coverings are called as the seed coats. We have studied the structure of anatropous ovule, the integuments, outer integuments and inner integuments. Ovule क्या है, इसके पास दो कवरिंग है। यही दो कवरिंग ओव्यूल्स की सीड की दो कवरिंग यानी सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज द आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट से आउटर टेस्टा बनेगा, इनर इंटीग्यूमेंट से इनर टेगमेंट बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, in some of the plants the two seed coats are not present। in some plants like lychee and in gadulus, lychee और in gadulus में क्या रहेगा, third integument is also present। that third integument sometimes lead to the development of auricle, and another covering is there, extra coat which is called as a auricle। किससे बना है, थर्ड इंटीग्यूमेंट से बना है। In some monocot plants like castor, so in some dicot plants like castor is there. The example castor is the Ricinus communicans, castor एरंडी जिसको हम लोग बोलते हैं, एरंडी के जो बीज रहते हैं जिससे हम लोग तेल निकालते हैं, कैस्टर ऑयल निकालते हैं, that Ricinus communicans is having another extra covering, that is the extra integument is there। उसके ओव्यूल में ही एक्स्ट्रा इंटीग्यूमेंट रहता है और ये माइक्रोपाइलर के साथ फ्यूज होके एक प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर बनाता है इन द कैस्टर विच इज कॉल्ड एज अ कैरंकल। दिस इज कॉल्ड एज अ कैरंकल। सो अगेन इट इज द थर्ड इंटीग्यूमेंट, इट इज द माइक्रोपाइलर। थर्ड इंटीग्यूमेंट और माइक्रोपाइल जो कि ओपनिंग रहती है एनाट्रोपस ओव्यूल की, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्पॉन्जी आउटग्रोथ बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेंकल। और ये सिर्फ कैरेंकल किस में नजर आ जाएगा, दैट इज इन द कैस्टर सीड। एंड ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन दिस कैरेंकल एब्सॉर्ब्स द वाटर एंड हेल्प्स इन जर्मिनेशन। द नेक्स्ट थिंग दैट इज द फिनिफिडस।
So the funiculus is called as the stalk of seed. That stalk of seed, funiculus कहाँ पे देखा था? जहां पे बॉडी जो है अटैच हो जाती है. किसकी बॉडी? ओव्यूल की बॉडी. दिस इज द ओव्यूल, अनाट्रोपस ओव्यूल. ये बॉडी है, दिस इज द बॉडी. ये अटैच हो जाती है स्टॉक से वाया वन रीजन विच इज कॉल्ड एज अ funiculus. This funiculus form the stalk of the seed. इसको हम लोग बोलेंगे scar, and that is the hilum one. अब seed कहाँ पे present रहते हैं? Inside the fruit. So it is attaches to the inside the fruit. Consider this one is the fruit, this one is the seed. तो यहाँ पे जो है seed क्या होते हैं? Attach रहते हैं. Point of attachment of seed towards the fruit is called as a hilum. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? Hilum. That is called as a hilum. So point of attachment of the seed inside the fruit is called as a hilum. Hilum हम लोगों ने देखा जहाँ पे funiculus और stalk दोनों रहते हैं. इसके point of attachment को हम लोग बोलेंगे hilum. The same hilum will be seed. Okay? If you are observing the seed को अगर हम लोग देखेंगे वहां पे क्या रहेगा? एक point of attachment रहेगा. This is the gram seed considered. तो यहाँ पे आप लोगों को point of attachment रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे hilum. And this attachment part, okay, seed का थोड़ा सा पास posterior part attach रहता है towards the fruit wall से. That part is developed from the raphe. कहाँ पे देखा था हम लोगों ने raphe? जहां पर क्या होता है? इंटीग्यूमेंट्स. ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है, पॉइंटेड डाउनवर्ड्स. दिस इज द एनाट्रोपस ओव्यूल. तो इंटीग्यूमेंट्स यहाँ पे निकाल रही हूं मैं. ओके, सो दिस फिनिकुलस पार्ट क्या है? दिस इज द प्लासेंटा. ये फिनिकुलस है. कुछ फिनिकुलस का पार्ट क्या है? अटैच हो गया है और चला गया है चलाजन एंड पर, जिसको हम लोग बोलेंगे रैफी. ये रैफी आप लोगों को नजर आता है क्योंकि सीड का पोस्टीरियर पार्ट क्या है? रैफी में डेवलप. रैफी क्या है? सीड का पोस्टीरियर पार्ट में डेवलप हो जाते हैं. हाइलम अटैचमेंट है. So the smallest seed are present inside the orchids. They are very light in nature and these are also called as a dust seeds. And the largest seeds are present inside the coconut. That is the double coconut, जिसको हम लोग बोलेंगे कोकोडिमर. It is the bilobe structure. एक लोब का जो है वेट हो जाएगा 6 kg. It is very light in nature. माइक्रोग्राम में है about 2.33 माइक्रोग्राम. And the coconut, that is the cocodemon, is about 6 kg in nature. The next is the nucellus. Sometimes the nucellus, जहाँ पे embryo sac present रहता है, वही nucellus से क्या डेवलप होते हैं? मेगास्पोर मदर सेल्स. यही न्यूक्लियस जो रहता है, न्यूसेलस जो रहता है, परसिस्ट रहता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी रहता है. दैट इज द ब्लैक पेपर एंड बीटवर्म. दैट इज गोइंग टू बी डेवलप इनटू द फ्लेशी पार्ट कॉल्ड एज अ पेरिस्पर्म. ये सीड कोट की आउटर की कवरिंग ही है जो कि कहां से डेवलप होती है? बचे हुए न्यूसेलस से. दैट इज द न्यूसेलस विच इज परसिस्टेंट रहता है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी जो रहता है जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूसेलस परसिस्टेंट. नेक्स्ट इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस. मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 चीजें यहाँ पे बेस इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, सीड कोड यहाँ पे रहना चाहिए. दैट इज द आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट. कभी कभी एक्स्ट्रा सीड यहाँ पे प्रेजेंट, एक्स्ट्रा सीड कोड यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. द नेक्स्ट इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस is later get developed into the tingulum. That is called as a tingulum, the embryonal axis. Consider this one is the seed one. This is the embryonal axis. ये आपकी क्या है? embryonal axis है. On the lateral side, the 2 cotyledons are present. These are the 2 cotyledons. Dicot है तो 2 cotyledons यहाँ पे present है. Single embryonal axis यहाँ पे present है. The upper part of the embryonal axis, that is the plumule, are going to be developed into the shoot, and the lower part is called as a radicle. This is called as a radicle. इसी को हम लोग क्या कहेंगे? About the radicle. Lower part of embryonal axis is radicle. Upper part is called as a plumule.
ल्यूम्यूल जो कि है डेवलप हो जाएगा शूट में एंड द रेडिकल विल गेट डेवलप इनटू द रूट्स एंड दिस इज द टू कोटिलीडॉन एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ कोटिलीडॉनल नोड. दिस इज कॉल्ड एज अ कोटिलीडॉनरी नोड. और कोटिलीडॉनल नोड के ऊपर का हिस्सा जिसको हम लोग बोलेंगे एपीकोटिल and the lower part is called as a hypocotyl. तो इस तरह से क्या हो गया, एक जो है आपका एम्ब्रियो बन गया. दैट इज द जो सीड के अंदर प्रेजेंट रहता है, दैट इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो कि दो कोटिलीडॉन के बीच में प्रेजेंट रहता है. Later, the seeds contain some reserve food materials. That reserve food material is in the form of a कोटिलीडॉन और इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से बन रहा है. एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हम लोगों ने देखी, सेलुलर, न्यूक्लियर टाइप, हेलोबायर टाइप, 3 टाइप की डेवलपमेंट रहती है. तो कोटिलीडॉन भी प्रेजेंट रहते हैं, एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट रहते हैं. लेकिन कभी कभी एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के वक्त सारे यूटिलाइज हो जाते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म्स एंड absence of endosperm, the seeds are classified as endospermic and non-endospermic seeds. That is the endospermic and non-endospermic. Endospermic seeds को हम लोग बोलेंगे albuminous seeds and non-endospermic seed is called as a non-ex-albuminous seed. And depending upon the number of cotyledons, they are divided as a monocot and dicot. Further हम लोग देखेंगे about the classification of seeds, that is the types of seeds. Types of seeds are basically divided on the basis of the cotyledons. कितने वहां पे cotyledons present रहते हैं. If one cotyledon is present, that kind of seed are called as a monocot one. Mono means one, cot means the cotyledon. Only one cotyledon is present. That classification is depending on the number of cotyledons. If 2 cotyledons are present, that is called as a dicot seed. Some of the scientists have divided the seeds on the basis of the endosperm present or not. If they are having the endosperm, they are called as the endospermic seeds. So dicots are further classified on the basis of the endosperm present or not. तो डाइकॉट जिनके अंदर 2 कोटिलीडॉन्स है, ये भी क्या हो रहे हैं, 2 कॉट्स लिखती हूं मैं यहाँ पे, 2 कोटिलीडॉन एंड 1 कोटिलीडॉन. अगर इन डाइकॉट्स के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक एंड इट ऑल्सो कॉल्ड एज अल्बुमिनस सीड्स. एंड इफ दे आर नॉट हैविंग द एंडोस्पर्म, दैट इज कॉल्ड एज एक्स albuminous seeds. Albuminous and ex-albuminous seeds are there. Ex-albuminous जिनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है. अब आप सोचेंगे कि एंडोस्पर्म कहाँ चला गया. During the embryo development requires some reserve food materials and that food materials is endosperm. तो जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो ये सारा का सारा एंडोस्पर्म खा जाता है. तो रिड्यूस एंडोस्पर्म या फिर एंडोस्पर्म रहता ही नहीं है, that is called as a non-endospermic or ex-albuminous. Next again monocot is also divided as the endospermic जिनके पास एंडोस्पर्म्स हैं and non-endospermic. The examples are castor, dicot endospermic, dicot non-endospermic, pea, gram and sunflower. Then monocot endospermic and monocot non-endospermic. The monocot endospermic wheat, rice and maize. तो हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे ये रहेगा मेज एंड द पी. एग्जाम्पल ले लो अबाउट द पी और द ग्राम इज बीज, दैट इज द बीन वन. एंड नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड्स आर द ऑर्किड्स वन. तो ऑर्किड के सीड किस तरह से रहते हैं,
बहुत मोनोकॉट्स होते हैं कि कॉटिलिडॉन प्रेजेंट रहता है और नॉन एंडोस्पर्मिक रहते हैं. So this is let us take the structure of monocot seed. What is the basic structure of monocot seed? सीड में मैंने आप लोगों को बताया क्या रहना चाहिए, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस. दैट एम्ब्रियोनल एक्सिस upper part is plumule. So this part is the plumule, and that plumule part is having the one covering which is called as a coleoptile. तो प्लूम्यूल के पास एक कवरिंग है विच इज कॉल्ड एज अ कोलियोप्टाइल. अगेन ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है. अगेन एम्ब्रियोनल एक्सिस की जो नीचे का पार्ट है दैट इज द कॉल्ड एज अ रेडिकल, एंड रेडिकल इज हैविंग द कवरिंग विच इज कॉल्ड एज द कोलियोराइजा. कोलियोराइजा. So covering of radical is called as a coleorhiza. Covering of plumule is called as a coleoptile. The plumule is going to be converted into the shoot, and the radical is now going to be converted into the roots one. And here some extra part is present. That extra part or reduced cotyledon is there. That reduced cotyledon is called as the scutellum. This is the reduced cotyledon. That is called as the scutellum. And above the part which is the endosperm part. This is the endosperm. Endosperm is having the starchy endosperm. So here the contain is the starchy one. जो बीच का आपको endosperm नजर आ रहा है that is the starchy endosperm, and it is having the proteinaceous layer which is called as a aleurone layer, जो कि मैंने इस तरह से लाइन से ड्रॉ की है. This layer is called as a aleurone layer. It is the proteinaceous in nature. अंदर का जो एंडोस्पर्म है क्या है, स्टार्ची नेचर का है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मेज वन, जिसको हम लोग बोलते हैं जी मेज. मेज भुट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके दाने का हम लोगों ने क्या लिया है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. किस तरह से रहता है, लाइक दिस. ओके, उसका हम लोगों ने लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लिया है. लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में हम लोगों ने देखा एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा और कॉटिलिडॉन यहाँ पे प्रेजेंट है. रिड्यूस कॉटिलिडॉन जिसको हम लोग बोलेंगे स्कुटेलम, एंड एंडोस्पर्म प्रेजेंट है जो कि स्टार्ची है, और इसकी लेयर जो है प्रोटीनिशियस लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज अ aleurone लेयर. और यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ सीड. सीड कहाँ पे रहते हैं, फ्रूट्स के अंदर रहते हैं. तो फ्रूट और सीड कोड क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं. So this white color covering is the covering which is called as a fruit wall. Seed coat and fruit wall. दोनों क्या हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं. ये कंडीशन हम लोगों ने कहाँ पे देखी थी, इनसाइड द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स which is called as a caryopsis. Caryopsis, where the fruit wall and seed wall is get fused to one another. Next हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं about the dicot plants का, dicot seeds का. So dicot seeds, two cotyledons are present here. These are the two cotyledons, and at this one the upper region is called as a hypocotyl, and above the terminal region is called as a epicotyl. And the next thing is that this is having the seed coat, और दो cotyledon के बीच का जो पार्ट रहेगा that is the radical one. This one is the पार्ट ऑफ द डाइकॉट सीड, जिसको हम लोग बोलते हैं बीन वन. बीन जो हम लोग खाते हैं, इसका हम लोगों ने क्या किया है, अगेन हम लोगों ने लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लिया है. इसमें आप लोगों को दो कॉटिलिडॉन नजर आ जाएंगे. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ हाइलम पार्ट. ओके, जहां से बीन्स आप लोगों को खुलते हुए नजर आएंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ हाइलम पार्ट. इट इज हैविंग द रेडिकल, hypocotyl and epicotyl, and two cotyledons are present, and this one is the embryonal axis. This is the structure of dicot seed, जिसको लोग बोलते हैं bean. Two cotyledons are present. Next हम लोग देखेंगे about the fruit one.